Now the role of cytokinin. Third plant growth hormone is cytokinin. It helps in cell division of cells. It helps in breaking dormancy in the seeds. What is dormancy? Dormancy is a state of inactivity. Like we become dormant when we sleep. We just become inactive. We do not die. हम मर नहीं जाते जब हम सोते हैं. We just become inactive. This state of inactivity is called dormancy, जिसका हिंदी में एक्चुअल मीनिंग है सुप्त अवस्था. जैसे कि seed of a plant, seed is a dormant state. घर में पड़े हैं दालें, राजमा, चने, दे आर डॉर्मेंट. जैसे ही हम इनको सॉइल में डालते हैं, दे रिसीव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड along with cytokinin, these conditions, this dormancy is broken and the plant, it gives off the radicle and plumule, and it gives leaflets and a new plant can be grown. So cytokinin, it helps in breaking dormancy. It delays aging in leaves. Delays aging मतलब aging क्या है? एज होना, बुढ़े होना. लीव्स को बूढ़ा होने से, जल्दी ओल्ड होने से बचाता है. It helps in opening of stomata. Then next hormone is ethylene. Ethylene is only gaseous hormone. All the other hormones, they are liquid by nature. Ethylene is the gaseous hormone. Its main function is it helps in ripening of fruit. जैसे अगर एक पके हुए फ्रूट के पास अगर हम बाकी कच्चे फ्रूट्स रख दें, रॉ फ्रूट्स रखें, आफ्टर फ्यू आवर्स वी विल सी दैट द रॉ फ्रूट्स दे ऑल्सो गेट ripened. Why? Because the ethylene from ripened fruit, it comes out because it is a gas. It comes out, it enters inside the raw fruit and they also get ripened. It prevents premature fall of leaf, fruit and flowers. हमने ये देखा है पत्ते झड़ते हैं प्लांट से, फ्रूट्स गिरते हैं, फ्लावर्स झड़ते हैं, लेकिन there is a time when they should fall off. There should not be any premature falling. That is, they should not fall at a young stage. So ethylene prevents premature falling of leaf, fruit and flowers. Next hormone is abscisic acid, which is growth inhibitor. It is also called stress hormone. When the plants, they face harsh environmental conditions, this hormone is released. What is इसके सारे फंक्शन जो हैं बाकियों के ऑपोजिट हैं. इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, यानी जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तो द प्लांट, इट बिकम सेवरल ऑफ इट्स पार्ट्स, दे बिकम इनएक्टिव. दैट इज डॉर्मेंसी इज इंड्यूस्ड. इट इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है. इट हेल्प्स इन closing of stomata. Closing of stomata, that is, it prevents in transpiration, ताकि unnecessary water loss ना हो plant से. It promotes aging and yellowing of leaves. पत्तों को old करता है और उनको yellow करता है. And it causes wilting of leaves. Wilting means मुरझाना. Wilting of leaves is caused by abscisic acid. So we are finished with control and coordination in plant.